There is Girish sir, right? Hello students, good afternoon everyone. My name is Nikhil Kumar, and welcome to the official YouTube channel of Pratham Prep Test. So, CAT exam happened this Sunday, and I'm sure you all must be excited to know what can be the key takeaways from that exam, and what can be the learnings for us or for the students who are looking forward to take CAT24 next year. Okay, so let's get started. There's no point in waiting or delaying it further. So this time we had 2.88 lakh people, candidates who took the test out of 3.33 lakh, which is slightly larger number. If I talk about quite a few years ago, the number was restricted to 2 lakhs. Roughly around 2 lakhs, 2 lakh students would be taking the CAT exam. Now it has gone way beyond 2.5. In fact, it has reached 2.88 lakh, which suggests that the competition level is bound to go higher. Am I right, Vidhi ma'am, Girish sir? Absolutely right. Yes, so I have with me the experts in LRDI, Girish sir. जादूगर बोलते हैं इन्हें बच्चे, LR के DI के जादूगर. And then we have Vidhi ma'am. She is the expert in QA. Okay, so they will also be sharing their insights on their respective sections. But anyhow, so yeah, what I was saying is it is bound to happen that the CAT exam will get a shade tougher. The difficulty level will go higher every year because you can see the number of students taking CAT exam is going higher. And this time, I think quant section was very tough. Okay, so before I start, I would like to take one word from both the experts, one word for their respective section. How are they going to describe their respective sections in one word or maybe in one line? Yes, ma'am. Difficult, super difficult. If Super I talk difficult. about quantitative aptitude, every year quant goes with like that only. But then this year, it has, I think, beaten all the records of previous years, what we have done in quantitative, or what we have expected in quant. So completely contrasting to what our thoughts was on quantitative aptitude. All the records broken. So records are meant to be broken, and quant section is taking that very seriously. चलिए ठीक है, गिरीश सर आप बताइए. So LRDI was in line, right? अगर previous year की बात करें तो it was like moderate to difficult, and this year also the pattern was moderate to difficult only, right? There was some new topics जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, right? वही conventional जो हमारे questions होते थे LRDI के वो इस बार नहीं आए, right? कुछ changes था pattern में, तो students को ये समझना होगा कि आगे के लिए new topics भी add हो सकते हैं, right? तो accordingly हम strategy में बात करने वाले हैं कि क्या क्या changes हुए pattern में और क्या students next year expect कर सकते हैं और किस चीज के लिए उन्हें ready रहना पड़ेगा अब next year से. Makes sense. So obviously they are going to share more insights, detailed insights in there when they are talking about their respective sections. Anyhow, अभी बात कर लेते हैं थोड़ा VA का. Okay, so VARC analysis. So pattern is almost set now. Okay, it's on the expected lines. There are no major surprises as such. हाँ, कभी कभी कुछ चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं, minor चीजें, but mostly the pattern is set, and it goes without saying that it's a RC heavy paper. So reading, a lot of reading is there. You can see 4 RC, 16 questions. Majority of the paper goes into the reading comprehension with multiple choice questions. So RCs have only to offer multiple choice questions. But if I talk about VA, yes, there are 8 questions, 4 multiple choice questions and 4 theta. Theta type in the answer. 2 theta आपके पैरा फॉर्मेशन में रहेंगे और 2 theta आपके odd one out में रहेंगे. And this is precisely the reason why para formation questions you will see are relatively tough, on the tougher side. Relatively, VA section वैसे easy होता है. In fact, I strongly recommend that you first skim the entire paper, see which are the passages you are going to pick up first, and also tell yourself that you have to save some time for VA section also, because VA section is very much doable. And out of 8 questions, 4 are theta questions. Para formation थोड़ा tough होगा ही होगा. इस साल बच्चों को थोड़ी सी ओपनिंग लाइन ढूंढने में प्रॉब्लम आई है. सो बट देन देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज अवेलेबल लाइक मैंडेटरी पेयर्स, कंक्लूडिंग लाइंस. बट यस,
para formation did offer some challenges. Odd one out was also not, definitely it will not fall in the category of the easier questions. Okay, but they have to be little tougher because there are no negative markings and it makes sense. Okay, so overall paper was an expected lines, and yes, you don't get any major surprises. However, there are certain aspects which we must look into. Why? So that we understand how should we prepare ourselves for the CAT 2024. That is the entire idea. So let's take a look at it now. One thing I have to tell you is, in RC, critical reasoning is playing a very important role. Okay, you will see that critical reasoning is heavily involved. Let me just read out a couple of questions. What kind of question they were offering to you? Like, which of the following can further be deducted except typical critical reasoning question? Which of the following, if true, would additionally undermine the author's main point? Again, you can see you have to understand the passage, and critically you should be able to solve it. So if you are not able to understand the passage, if you don't have the stamina to go through the entire passage, it's going to be tough. What I mean by stamina, I mean that you should be able to read and understand those kind of passages which you would not read otherwise normally. Okay, I'll tell you what kind of passages we get. So this is slot 1, if you take a closer look. And there's something very interesting which has happened this time. You can see Return of Wolves. This is one passage in slot 1, morning slot you got. The reading level was easy. But the questions, out of 4, 2 questions were inference-based questions and both the questions were tough. That means अगर आप इजी पैसेज को पिक कर लेते हो, जरूरी नहीं है कि आप स्कोर कर लोगे, क्योंकि हो सकता है उस पर क्वेश्चन टफ हो. वन मोर केस, नेक्स्ट पैसेज अगर आप देखोगे, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविलाइजेशन पे एक आया था. रीडिंग लेवल इजी टू मॉडरेट, बट क्वेश्चन टफ कर दिए. एंड इन द नेक्स्ट वन, एफ्लुएंट सोसाइटी, व्हिच ऑफर्ड the author was giving you an anthropological approach. Reading level difficult, but questions were easy to moderate. So what I'm trying to convey, students have to get out of that mindset that I'll pick the easier 3 passages and solve them. I'll leave the 4th toughest passage and I will still be able to score well. That may not be possible now. What they are doing is, easy passage में tough questions आ रहे हैं और tough passage में easy questions भी वो दे सकते हैं. So you have to be very careful about this part. Slot 1 का अगर आप देखो, and in fact it's true for all these slots more or less. मैं आपको थोड़ी रेंज दे देता हूँ कि कितने अटेम्प्ट पे कितनी परसेंटाइल आ सकती है. 99th परसेंटाइल अगर आप टारगेट कर रहे हैं वर्बल VARC सेक्शन में, then your scores should be somewhere around 35-36, which means 12 to 13 questions you should be getting correct. Okay, 99th परसेंटाइल. तो अगर आपका रीडिंग स्टेमिना है, क्रिटिकल रीजनिंग की अच्छी नॉलेज है, आई कैन अश्योर यू CAT 4 दोगे आप इजीली. ओके, 95th परसेंटाइल के लिए 11 क्वेश्चन, विच इज अगेन डुएबल, आई वुड से. क्यों डुएबल? क्योंकि VA सेक्शन, वर्बल एबिलिटी सेक्शन में जो 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 टीटा है, वहां से भी आपके काफी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे. ओके, एंड सो 11 क्वेश्चन, 33 स्कोर, 95th परसेंटाइल. जो 85th कट ऑफ है वो 6 to 7 क्वेश्चंस पे इजीली मिल जाएगी, 19 to 20 स्कोर पे. बट व्हाट आई रियली वांट टू फोकस ऑन इज, you have to build stamina for reading. You have to read these kind of things, literary passages. You have to read book reviews. You have to be reading now passages offering anthropological approach, philosophy. ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, and you have to build this, and it won't happen overnight. This will take a long period of time. तो आपको स्टार्टिंग से ही ये हैबिट बनानी पड़ेगी, एंड क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. समथिंग सिमिलर हैपेंड इन द सेकंड स्लॉट आल्सो, अगर आप देखोगे तो. ऑल राइट, सेकंड में भी आपका पहला है फास्ट फैशन. इजी लेवल है, मॉडरेट क्वेश्चन दिए. फास्ट फैशन आपका, द सब्जेक्ट मैटर वाज वेरी कंटेम्पररी. इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन और टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी and saving planet. Language was not tough and neither the questions were, but some choices were closely worded ones. Closely worded choices थी आपके पास. Next passage अगर आप देख रहे हो तो, history interpretation of facts. It actually talked about to what extent fact is a fact, and questions were tough. Obviously, this passage was time consuming. Okay, so moderate passage.
but questions were very difficult. Once again, CAT is playing that pattern. It is following that pattern. Netflix and European culture, easy इसलिए क्योंकि again contemporary read है, language moderate थी इसकी. It was throwing light on different aspects such as US online and TV programs entering the US, the United States, and their acceptance by the Europe. Okay, so what should Netflix be doing more? How the local broadcasters are still the major players? These, again, this is something which you could relate to. But what happened? The questions were slightly moderate, I would say, easy to moderate. There was one passage, liberalism. Of course, the moment you see liberalism or ism, you know that it is abstract. It's going to be offer lengthy arguments. Tough, question be tough, passage be tough. Then this was slot 3. I would say slot 3 was the toughest. Okay, I'll explain why. Pinker's rationality. This is a book review, book written by philosopher Pinker. Okay, and obviously, what was discussed here? Philosophical concepts were discussed. Reading level difficult, questions moderate to difficult. Museum artifacts and patrimony laws. Again, here you have it was dealing in sociology and archaeology. Again, reading level moderate, but questions were moderate to difficult. Romanticism. This is again literary concept, very difficult. Questions were also difficult, but passage was very difficult. And if I talk about the last one, climate change and netback's curse by Amitav Ghosh, again difficult. Okay, and questions were also difficult. So you can see here, slot 3 passages were relatively on the more difficult side. That's why I would say slot 3 was the toughest. Anyhow, what I'm trying to convey here is that yes, you have to definitely skim the passages first. Try to shortlist 3 passages. There's no guarantee that if the passage comes across as an easier one, the question will also be easy. There's no guarantee. बट हाँ, अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की होगी, then definitely critical reasoning अगर strong होगी तो आप you will definitely sail through. So 3 passage निकाल सकते हो आप, 12-13 question निकाल सकते हो. 12 questions, 16 questions are being offered by RC section. एक पैसेज अगर पूरा भी छोड़ दिया तो भी आपके पास 12 क्वेश्चन बचते हैं. 12 में से let's say 9 questions you are getting correct. Then you have VA section left, 8 questions there. I think if the ask is around 12 to 13 questions, it is not much. Okay, so paper, yes, I would say the level was not very high as compared to the previous one, but yes, a shade more difficult, a slight shade definitely more difficult, and you will keep on seeing that every year. And reason I've already told you why, because the number of applicants, the number of candidates who are taking the CAT exam, they are increasing, and it makes sense. They will keep on making it a shade tougher, higher difficulty level every year. So what is my one I would say one important piece of advice that I would like to offer is read newspapers on daily basis. Do not, I'm not saying reading front page or national page, because that is something you can relate to very easily. Rather, I would suggest read international page more, read business page more, editorial page definitely you have to be reading. Books also, I would suggest that you should be reading classics more, like books written by Charles Dickens, books written by Jane Austen. These kind of authors will definitely help you more as compared to those who write page turners or interesting books. ठीक है, तो ये पूरे साल की मेहनत है. Reading takes a lot of time. Start reading newspapers, start reading classics, okay, these kind of authors. And yes, focus more on critical reasoning. If you are not strong at critical reasoning, it will become a very challenging paper for you. Okay, but having said all that, if you follow the basics, you read regularly, you work on your critical reasoning skills, I think this paper is meant for you. And as I say, paper up for the way. Okay, now I'll be leaving you for some time in more than capable hands of Girish sir, DILR ke Jadugar. Okay, sir, please share your valuable insights now. Okay, everyone. So let's talk about
LR and DI. So let's talk about in general कि हमें पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए, राइट? लेट्स टॉक अबाउट कि पेपर अगर मुझे देना है क्या करे कैट की 2024 के लिए, इफ आई एम प्रिपेयरिंग तो मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, राइट? सो वेरी फर्स्ट थिंग, attempt any one mock test, any one good mock, right? आपको बहुत सारे free mock test मिल जाएंगे, available होंगे, right? Try that mock test so that you'll get to know आपका वीक एरिया क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, राइट? ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हो, राइट? जब तक आपको पता ही नहीं आप किस सब्जेक्ट में, किस सेक्शन में कंफर्टेबल है, किस सेक्शन में यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, वो मॉक टेस्ट के बाद यू विल गेट द आइडिया, राइट? एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन इन द राइट डायरेक्शन, right? This is the first advice from my side. This is the common advice for all the subjects. Then second thing, right? Let's talk about LRDI first, right? So very first thing for LRDI, you need to start with the foundations, right? So first क्या करना है, in the very first month or in first 15-20 days, आपको अपने foundations strong करने, आपने जो अभी तक पढ़ा होगा, लेट्स से यूजी के लिए आपने प्रिपरेशन करा या कभी भी लॉजिकल रीजनिंग या डेटा इंटरप्रिटेशन से पहले जो भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको रिवाइज करना है, राइट? सो दैट आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएंगे. एंड सेकेंड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको सुडोकू करनी है, राइट? पजल सॉल्व करनी है. इट विल हेल्प अ लॉट बिकॉज आपने देखा होगा फॉर दिस ईयर कैट LRDI बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस थे, राइट? If you are good in Sudoku, good in solving puzzles, then you can easily tackle those problems, right? So first advice, mock test, you will get to know your weak areas and strong areas. Then second advice for this particular subject, logical reasoning and data interpretation, foundations, right? So आपको अपने foundations बहुत strong करना है in first 1 month or first 20-25 days, right? And Sudoku, ये तो आपको रेगुलर बेसिस पे करना है, राइट? तो इट विल हेल्प यू अ लॉट इन लॉजिकल रीजनिंग पजल्स. नाउ अभी बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का क्या होने वाला है, ठीक है? सो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली बच्चे कैसे प्रिपेयर करें फॉर 2024 और फॉर 2025 इफ यू आर टारगेटिंग, राइट? सो लॉजिकल रीजनिंग में ना बहुत सारी वेराइटीज है, राइट? आपको हर एक वेराइटी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड टू सॉल्व समथिंग अराउंड 500-600 पजल्स बिफोर योर पेपर. अभी लग रहा है सर ये 500-600 नंबर तो बहुत बड़ा है, ये कैसे अचीव होगा, राइट? सो बच्चे एक सिंपल सा फंडा करते फॉर LRDI फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड ओनली, राइट? आज से स्टार्ट कर देते 2 पजल्स डेली, राइट? 2 पजल्स डेली. कैट के अभी कितने डेज है? 365 डेज. So 365 into 2, you can do more than 700 puzzles. And even मैंने बोला अगर आपने 500 puzzles भी कर लिए हैं तो I assure you कि आप 99 percentile बहुत easily score कर सकते हैं LRDI section, right? So LRDI की अगर बात भी करें, मैं आपको इस बार का analysis show कर दूँ for 2023. Slot 1 paper is like in every year, अगर last 2021 पेपर आप देखेंगे, 2022 देखो, and this is the analysis for 2023. See, you will find one easy section, right? One easy set every time. So आपका scanning of the paper is very important, right? ऐसा बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है very first set is difficult and आप उसमें अपना टाइम खराब कर रहे हो, right? पहले ये देख लो कोई ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेट है, ऐसा डेटा है जो फेमिलियर है आपसे. Start with that data. Like इस पेपर में slot 1 सेकेंड सेट वॉज इजी, राइट? जिसने भी यहां से स्टार्ट किया उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाता है, राइट? सो स्कैनिंग ऑफ द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन एवरी सेट यू विल फाइंड 1 इजी क्वेश्चन एंड 1 मॉडरेट क्वेश्चन. तो उन्हीं दोनों क्वेश्चंस को फाइंड करना है, राइट? दिस इज द राइट स्ट्रेटजी. यू विल फाइंड 2 इजी, 1 इजी, 1 मॉडरेट एंड 2 सेट्स डिफिकल्ट, राइट? सो अगर आप ये दोनों सेट्स भी कर लेते हैं तो योर स्कोर विल बी 9 to 10 correct questions, right? Approx 30 you can easily score. 30 means 99 plus percentile. This is your target, right? So you can easily achieve 99 percentile in LRDI section, right? अगर ये simple सी strategy आप follow करोगे तो
It's not very difficult, right? And एक बात समझ लो, LRDI generally first time अगर आप appear करें तो you will find LRDI difficult compared to other papers, right? कैट की जो LRDI है वो उसका लेवल हाई होता है. यहाँ पर जो टॉपिक्स यू विल फाइंड कि हर बार आपको नए टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं. यहाँ पर यू विल फाइंड देयर इज वन टॉपिक मीन मीडियन मोड, राइट? दिस वाज द सरप्राइज दिस ईयर, राइट? तो मेक श्योर नेक्स्ट ईयर के लिए यू अगेन यू विल फाइंड सम सरप्राइजेस. ठीक है, तो एक बात याद रखो, लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए. देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? See, one quant based question was there, right? So quant based logical reasoning question. ठीक है, data interpretation is purely based on maths, right? So ये parallel चलने वाला है आपका QA and LRDI. ठीक है, and यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उनकी भी हम बात करेंगे कि किस किस टॉपिक को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, राइट? बट बेसिकली स्टार्ट विद पजल्स एंड सुडोकू ओनली, राइट? ओके, देन दिस वाज द एनालिसिस फॉर सेकंड शिफ्ट. देखो यहाँ पर भी एग्जामिनर को क्या करना होता है, अपने पैटर्न को मेंटेन करना होता है. इन सेकंड शिफ्ट आल्सो यू विल फाइंड वन क्वेश्चन फ्रॉम मीन मीडियन एंड मोड. अगेन हियर वन क्वेश्चन इज इजी, one is moderate, and you'll find two difficult sets, right? So this is the common strategy of the examiner for LRDI paper every year. Even आप 2022 देख लो या 2023 देख लो, right? And further you can see in the next set, here again you'll find one question from the same topic. This is the new topic जिसको देख के स्टूडेंट्स को इस बार जिसने ये टॉपिक प्रिपेयर किया था उनके मजे हो गए, राइट? द सेट वाज इजी टू मॉडरेट, नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट? सो मीन मीडियन मोड वाज द न्यू टॉपिक दिस ईयर. सो अगर कॉमन टॉपिक्स की बात करें, राइट? सो इस बार का क्या था, थोड़ा सा पेपर पैटर्न में चेंज था. कन्वेंशनल जो पेपर क्वेश्चंस होते थे LRDI के, वो इस बार नहीं थे, थोड़े ट्रिकियर क्वेश्चंस थे. तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आपको सुडोकू एंड पजल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा. मिनिमम 400 to 500 पजल्स आपको बिफोर योर एग्जाम आपको सॉल्व करनी होंगी, राइट? एंड दीज आर द कॉमन टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर LR and DI before your exam. And the last but not the least suggestion from my side is mock test, right? Mock test is the key. आप बिफोर योर पेपर ना आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे ना उतने ज्यादा चांसेस है कि आपका स्कोर बूस्ट होगा. दिस इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर increasing your score in any paper, not only for CAT, for every exam, right? So this is all about for LRDA section. Now let's move to the next mentor. Vidhi ma'am will guide you about QA section. Over to you, ma'am. So yes, I would start by saying that CAT हमेशा एक rejection paper होता है. Girish sir, would you agree with me on this? It is Yes, ma'am. more towards a rejection paper Yes. rather than a selection paper. So we all have to deal with it, and we all have to deal with quant section with this rejection over here. So there are few surprises that we had for quant paper. पहले हम quant की थोड़ी सी बात करते हैं, that how was quantitative aptitude, how was QA paper in slot 1, slot 2 and slot 3. There are common things that we have seen in slot 1, slot 2 and slot 3 papers. Common things हमने क्या देखा, that it was more emphasis has been given on arithmetic and algebra. This is no surprise to us. ये हमारे लिए surprising नहीं था because algebra and arithmetic हमेशा ही बहुत ज़्यादा आता है. But अगर आप across the slots की बात करते हो तो in slot 1, slot 2, slot 3 more or less arithmetic and algebra was forming around 15 questions in each slot. 14 to 15 questions, which is adhering to 7 to 8 questions in algebra and 7 to 8 questions in arithmetic. That is what we had in slot 1, 2 and 3. We'll talk about that whether these questions they were doable or they are not doable questions. We'll talk about that thing later. But first we are going to talk about that how the paper has been set up. So the surprising factor in this thing is that there were very, very less questions on modern mathematics that has been seen in all the slots. Modern maths के questions like अगर आप slot 3 की बात करो तो slot 3 में there was
no permutation and combination question, there were no probability question. Modern mathematics के अंदर जो हमारा आया था, modern mathematics was more towards function का question in slot 3. However, there were 1 or 2 questions which could be seen in slot 1 for PNC and probability. Right? So modern mathematics was very, very less as compared to the previous year papers that we had. Right? Then surprisingly there were one clocks question, जबकि clocks question बहुत कम आता है, but खाली वो एक ही slot के अंदर आया, which was in slot number 1. Right? Now talking about more topics is logarithm. Like logarithm was one topic which has been discussed in slot 1, in slot 2, as well as in slot 3. So we discussed the logarithm thing in all this. It was been fairly distributed that it started with a logarithm question, but in slot 1 and slot 2 the logarithm question was fair enough, but in slot 3 it was not at all a doable question. Rather, I would say it was a very, very lengthy question. So this was the paper is being distributed across कि slot 1, slot 2, slot 3 में इस तरह से paper को distribute किया गया. Right? So this was the paper. Now coming back to whether the questions, they were doable questions or they were not doable questions, because there has been a lot of hype being created about quantitative aptitude section and the hype being real. Yes, it's real that the questions were difficult. Absolutely, they were difficult questions. Why they were difficult questions? There are few pointers on it that why they were difficult questions. First, there were no direct questions. Very, very less direct questions that we have seen. What do we mean by direct questions? Direct questions क्या होता है कि आपको बोला हुआ है find out the values for A and B. You found the values for A and B and there is your answer, right? But it was not the case this year. Even आपने अगर A, let's say quadratic question था जहां पर आपने B या A का value निकाल लिया, but उसके बाद उसको combine कर दिया गया with finding out some maxima or some minima. So the questions, they were like two-step questions में हुआ क्या, चाहे question का level easy भी होगा, but it was so lengthy कि by the time you realize question खत्म हो गया, उस time तक आपका time बहुत ज्यादा जा चुका. Right? So this was one thing, that there was no direct questions here. Second, what was the main thing of the paper over here is आपके सारे question in line थे. अगर आपने पेपर बहुत ध्यान से दिया है, पेपर को ध्यान से देखा है, तो एरिथमेटिक के क्वेश्चन अगर आपने स्टार्ट करा तो एरिथमेटिक के सातों क्वेश्चंस एक लाइन में थे, वन बाय वन. सीम्स लाइक अरे ये तो पूरा एरिथमेटिक का ही पेपर है क्या, और कोई क्वेश्चंस नहीं है इसमें. सेम विद अलजेब्रा, कि अलजेब्रा जब हमने स्टार्ट किया तो 7 से 8 क्वेश्चंस वो सारे इन रो थे कि वन आफ्टर द अदर. नेवरदलेस इस तरह से पेपर कभी सेट नहीं होता है. देन वी हैव ज्योमेट्री, 2 से 3 क्वेश्चंस बट अगेन इन अ लाइन. पहला एक क्वेश्चन आया, फिर उसके बाद दोबारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. एंड सिमिलरली इट गोज टू नंबर्स एज वेल एज मॉडर्न मैथ्स इन दी एंड, कि जहां पर आपके पास लास्ट में एक आधा क्वेश्चन जो बचा वो बचा. सो पेपर वाज लाइक दिस कि सब कुछ एक लाइन में पेपर था. इट इज अक्रॉस ऑल द 3 स्लॉट्स. पहले 7 इसके क्वेश्चन, दूसरे 8 इसके क्वेश्चन, देन ज्योमेट्री, देन नंबर्स एंड देन modern mathematics. So this is how being the paper has been, the main things of the paper for CAT 2023. Now, let us talk about what are the learnings from this paper, because that is more important over here. As we have heard a lot about it, we have given the paper, we know how the paper is. It is difficult, yes it is. बट अब हमें आगे क्या करना है 2024 के लिए, अगर हम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो व्हाट आर द लर्निंग्स दैट वी हैव टेकन फ्रॉम दिस पेपर. सबसे पहला लर्निंग दैट आई वुड रेकमेंड इज कि कोई भी आप अपने दिमाग में पहले से ये इमेज नहीं बना के चलें कि पेपर जो है डिफिकल्ट होगा या पेपर इजी होगा या पेपर मॉडरेट होगा, या फिर कुछ इस तरह से बना के चलें कि अर्थमेटिक है तो अर्थमेटिक के ही पहले 7 क्वेश्चंस आएंगे या अलजेब्रा के पहले 7 क्वेश्चंस आएंगे. नो, डू नॉट बी टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्री नोशंस अबाउट द पेपर, अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर. आपको अपनी तैयारी टफेस्ट के लिए करनी है और आपको वो करनी है. पहले से ये देखिए इस बार मॉडर्न मैथ्स नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम भी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. अगर इस टाइम मॉडर्न मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे. तो देयर शुड बी नो नथिंग लाइक दैट. यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द पेपर कि हाँ ठीक है ये चीज हुई है तो नेक्स्ट ईयर भी ये चीज होगी. नो, व्हाई?
बिकॉज ऐसा होता ही नहीं है चेंज की वजह से। इस बार भी आपने देखा लास्ट ईयर से इट वाज चेंज, तो हर साल चेंज होता रहता है। व्हाट वी वर्क ऑन इज द 10 इयर्स पेपर, वी वर्क ऑन द 10 ईयर सिनेरियो। आप पूरे पिछले 10 साल का एनालिसिस लेके चलिए, उसके बेसिस पे आप इमेज क्रिएट करते हैं कि पेपर किस तरह से होगा, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट लर्निंग दैट यू हैव टू टेक इट फ्रॉम द 2023 पेपर. The second learning, and I would say that this is the most important learning for the paper, is the strategy. मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बारी स्टूडेंट्स को जब काउंसिल करते बहुत बारी ये चीज बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी, बेटा वेयर इज द स्ट्रैटेजी? यू आर डूइंग ऑल काइंड ऑफ हार्ड वर्क बट यू आर नॉट डूइंग द स्मार्ट वर्क इन द पेपर. स्ट्रैटेजी वॉज मिसिंग. कैसे मिसिंग हुआ स्ट्रैटेजी? बच्चे ने पेपर देना शुरू किया, पहला क्वेश्चन आया लॉगरिथम का क्वेश्चन combined with an arithmetic progression, a log question combined with an arithmetic progression, और उसमें भी 2 स्टेप कॉमन डिफरेंस निकालना था वहां पर आपको. तो इस तरह का जब क्वेश्चन आया, यू थॉट कि हाँ लॉगरिथम तो हमने बहुत प्रैक्टिस किया, हमने 100 क्वेश्चन बना रखा है लॉगरिथम में, पहले से ही 200 क्वेश्चन बना रखा है, तो हम तो लॉगरिथम कर देंगे. एंड दिस स्टार्टेड ऑफ विद लॉगरिथम without even noticing कि logarithm में कुछ इस तरह का expression था 2 to the power x which created a problem for us. We have to solve a little lengthy in order to get the answer from that particular question. और हुआ क्या? वेस्टेज ऑफ द टाइम. क्वेश्चन भी नहीं बना और टाइम भी वेस्ट हो गया. तो स्ट्रैटेजी तो अप्लाई किया ही नहीं. स्ट्रैटेजी था क्या? जो स्ट्रैटेजी हमने पहले आपके साथ डिस्कस करा हुआ है कि आप पूरे पेपर को, अगर मैं 40 मिनट्स की बात करूं, क्वांट के सेक्शन की बात करूं, तो आप इस पूरे पेपर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे विच इज 10 मिनट्स ईच. ये स्ट्रैटेजी था. और हर एक में 6 क्वेश्चंस आप देखेंगे तो खाली कॉन्सेंट्रेट ऑन दो 6 क्वेश्चन, हियर देयर ये सब नहीं करना है. then 5 questions, then 6 questions, then 5 questions. इस तरह से आप अपने पूरे 22 questions पे फोकस कर सकते हैं. So the strategy had played a very important role in this year paper. I will give you an example. So कोई बच्चा जब पेपर दे रहा था तो उसने पेपर स्टार्ट करा अर्थमेटिक. अरे मेरा अर्थमेटिक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड इन अ रो उसने देखा कि 5 7 6 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आ गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, लॉस्ट होप, टाइम निकल गया हाथ से, वो उन्हीं के अंदर उलझ के रह गया. ठीक है, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि जब वो टुवर्ड्स एंड अगर थोड़ा मूव करता है स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कि 10 मिनट्स में खाली यही क्वेश्चन देखने हैं, देन 10 मिनट्स में ये, देन 10 मिनट्स में ये, देयर वाज वेरी इजी क्वेश्चन on interior and exterior angles of a polygon, which was a very halwa question, I would say, कि वो आपको बस दे दिया गया है कि ये लो, तुम इतने देर से टफ कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन लो, solve it and get the answer, right? तो strategy was the second learning. जो बच्चे हार्ड वर्क करते हैं उनको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा, otherwise you will not be able to crack the quantitative aptitude paper. So the second learning that you will be taking is the strategy. And the third learning, which is again an important learning, is that you will have to work in depth with the questions. When I talk about in depth with the question, is not like कि आपने 100 क्वेश्चन बना लिया, 50 क्वेश्चन बना लिया, टॉपिक हो गया. नहीं, मुझे सिमिलर क्वेश्चंस करने ही. I will have to try the variety of question, and that too in depth, in order to take the things. कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करनी है. कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आप क्वेश्चन को उतना बेटर बना पाओगे. इट इज नॉट अबाउट दैट यू हैव प्रैक्टिस द सेम क्वेश्चन अर्लियर और नॉट. इट इज अबाउट दैट हाउ स्ट्रॉन्ग इज योर कॉन्सेप्ट इज टू डील विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन और टू क्रैक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो इन डेप्थ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ऑफ ऑल द टॉपिक्स. Of all the topics, बहुत बच्चे आते हैं मैम important topics बता दो. There is no important topics, there is all important topics in quantitative aptitude. अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा बेटा आप क्लॉक, सपोज किसी ने सोचा कि क्लॉक्स यार आते ही नहीं, क्वेश्चंस नहीं करते हैं ना, क्लॉक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है. अब जिसने क्लॉक्स पढ़ा, इतना इजी क्वेश्चन क्लॉक्स का आया था, दैट फेच्ड यू +3 फॉर दैट क्वेश्चन. कम ऑन, हम जिस स्टेज पे बैठे हुए हैं क्वांट में, +3 मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट? सो एक सिंगल क्वेश्चन आपको बचा सकता है पेपर में, और एक सिंगल क्वेश्चन आपको डुबा सकता है पेपर में. तो स्ट्रैटेजी ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इन डेप्थ क्वेश्चंस आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं, ऑल द टॉपिक्स. नाउ फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज, जो मैंने थर्ड में भी बोला था कि जब हम इन डेप्थ की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना है.
I need to work more and more on the conceptual clarity of the questions, right? Dusra, I need to practice more of theta based questions. If you've seen the paper, last year there were 8 questions on theta. This year also it has 8 questions on theta. थीटा क्वेश्चंस इंक्रीज होने का मतलब ही यही है कि पेपर लेंदी होगा. पेपर लेंदी का मतलब है कि आपको अप्रोच लेना पड़ेगा टू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चंस, अटेम्प्ट लेस एंड मोर एक्यूरेट. जितना ज्यादा एक्यूरेसी रखोगे, जितना कम अटेम्प्ट करोगे, जितना कम का मतलब ये नहीं है कि मैम ने बोला 22 क्वेश्चंस था, मैम 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो हो गया, नहीं. क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट का मतलब है आपको छोड़ना आना चाहिए, क्वेश्चंस को पकड़ के नहीं रखना है. वी हैव जस्ट 40 मिनट्स इन हैंड, वी डोंट हैव दैट मच टाइम कि हम एक क्वेश्चन के ऊपर 15-15 मिनट लगाएं या 10-10 मिनट लगाएं. क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लीव द क्वेश्चन, आगे चलो एंड ट्राई फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. The less you will attempt, but with more accuracy, will give you a 99 percentile for sure. So these are the few learnings from CAT 2023 paper that we should take forward in CAT 2024 paper. And ending with this, ending with my closing statement for Quant, that is, if the exam is tough, and we know it is tough, you have to make yourself tougher. If you'll make yourself tougher, you will definitely going to crack CAT 2024. Right? So over to you, Nikhil sir. Thank you, Vidhi ma'am, or as we call you, Queen of Quant. Okay, yeah, I think very, very valuable insights shared by Queen of Quant or LR Jadugar. I think makes a lot of sense. And I think we all said one thing which is in common. Skimming the passage, skimming the paper is important. Question selection is important, because all of this leads to saving time. And let me tell you, time in CAT is gold. और सोना जो गोल्ड होता है उसको बांटते नहीं है, उसको संभाल के रखते हैं. It can be a make or break point. So yes, save the gold, save time. Skimming is very important, and just follow the strategies which have been shared by you. And feel free to shoot any doubts, queries to us in the comment section. Okay, we'll be happy to answer them. And if there's anything, ma'am, sir, please let us know. Otherwise, we can wind up now. Yes, sir. All's good? Yeah. Okay. Good luck, everyone, for CAT 20. Those who are preparing for CAT 2024. All the best. Thank you. All the best. All the best. Thank you.